वेलकम गाइस, वेलकम। आप सबका स्वागत है एक्सपर्ट टॉक विद पलक पे। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। आज हमारे साथ आ रही हैं डॉक्टर अंजलि। शी इज इंटरनल मेडिसिन एमडी एंड आईएफएम प्रैक्शनर यूएसए। आप लोगों को हार्मोन्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं आप डॉक्टर अंजलि से पूछ सकते हैं। शी इज ऑल्सो ये वेट लॉस, थायराइड, डायबिटीज रिवर्सल, पिगमेंटेशन, स्किन इश्यूज, बायोडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये सब करती हैं डॉक्टर अंजलि। एंड मैंने अपने जो पास्ट हमने पोस्ट किया था वहां पे कुछ क्वेश्चंस आए थे, स्पेशली रिलेटेड टू पीरियड्स problem related to the role of liver in hormones and pregnancy, PCOS. So we're going to discuss everything. आपको बहुत learning होने वाली है. I am very excited, guys. Let's welcome Dr. Anjali. And yes, let me see where she is. Hello. Hello, Dr. Anjali. Welcome. Welcome to the show. Hi, how are you? I'm good. How are you? Very well. You look beautiful, huh? Thank you. Thank you. And I love your hair. So this is 9 o'clock in India and you don't look tired at all. Oh God, I have to tell you, I'm very tired. Yeah. Maybe your definition Yeah. of tired is some, because when I'm tired, my hair doesn't look this way and I'm not smiling. So maybe let's say the reason of your smile is your balanced hormones. Yeah, you can say that actually. You know? Oh yeah, Yeah. you're. So we are very excited because out of 2 million followers, 1.5 million followers are women, Dr. Anjali. And I got my recognition in this field when I never knew what's happening to my mom, why she's mean to me, and why she wants to cry all the time. So मैं ना डॉक्टर अंजलि, हम हिंदी में ही करेंगे। तो मैं ना मम्मा के बिल्कुल। सामने ना ऐसे ऐसे करके चलती थी कि अभी थप्पड़ पड़ेगा, एंड मुझे बहुत थप्पड़ पड़ते थे। सो जब बाद में मैंने डॉट्स को कनेक्ट करना शुरू हुआ, मम्मा को थायराइड हुआ, मम्मा को पिगमेंटेशन हुई, मम्मा को फैटी लिवर हुआ, तो मुझे लगा इन सब का रिलेशन कहीं ना कहीं हार्मोन से है। तो मुझे फिर उनको एक गुस्सा गुस्सा की जगह उन पे प्यार आने लग गया। सो इज इट ट्रू डॉक्टर अंजलि? Actually, when women go through, जब उनका hormonal disturbance का phase आता है ना, तो mood swings बहुत होते हैं. मूड स्विंग्स होते हैं और इनटॉलरेंस हो जाती है चीजों के लिए, औरतें जनरली बड़ी एडजस्टिंग होती हैं लेकिन एक टाइम के बाद एक टाइम ऐसा आता है, यूजुअली व्हेन देयर इन द पेरीमेनोपॉजल फेज ना, जब मेनोपॉज आने वाला, वो बड़ी इंटॉलरेंट हो जाती हैं और उनको वो पेशेंस नहीं रहती जो आपने एज अ मदर देखी होती है ना अपनी मदर में, कि राइट। अरे सब कुछ माफ है, ये भी करेंगे आपके लिए, वो भी करेंगे, बट उस टाइम पे उनका टॉलरेंस लेवल बिल्कुल, एंड इट इज ये सृष्टि का खेल है, इट्स नॉट लाइक समथिंग, इट्स नॉट रॉन्ग, आई मीन इट, आई थिंक इट इज, होना चाहिए ये, मतलब एक पॉइंट के बाद औरत को अपने आप में फील करना चाहिए ना कि मैंने बड़ा दे दिया यार, अब मुझे वापस का टाइम है, आई थिंक इट्स ओके, बट इट्स डेफिनेटली समथिंग कि होता तो है ही, बट उसको किसके साथ कितना होता है और किसको कितना इम्प्रूवमेंट चाहिए मूड स्विंग्स में, वो देन वी आर्टिफिशियली मैनेज एज हार्मोन एक्सपर्ट्स, बट ऑफ कोर्स लॉन्जेविटी तो बहुत बड़ी चीज होगी ना, ज्यादा उम्र जीना, यंग लगना, और इसलिए ये चीजें हार्मोन्स पे डिपेंड करती है इवेंचुअली, एस्ट्रोजन पे, प्रोजेस्टेरोन पे. रियली? सो आजकल देयर इज दिस बिग, जैसे वेट लॉस में डॉक्टर लोग कहते हैं दिस इज अ फैट टर्म, इंटरमिटेंट फास्टिंग। देयर इज समथिंग विद हार्मोन्स, इट्स कॉल्ड एस्ट्रोजन डोमिनेंस। कैन यू, या या व्हाट इज एस्ट्रोजन डोमिनेंस? उन लोगों को क्यों हो रहा है एस्ट्रोजन डोमिनेंस? उसके क्या सिम्टम्स है? उसको नेचुरली कैसे ठीक किया जा सकता है? देखो, एस्ट्रोजन डोमिनेंस क्या होता है कि आपके ना दो तरह का एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म होता है, तो आपके अंदर जो एस्ट्रोजन है उसको वो दो पाथवेज या थ्री पाथवेज में जाके वो मेटाबोलाइज होता है. तो अगर एस्ट्रोजन डोमिनेंस होता है, उसका मतलब ये है कि बैड एस्ट्रोजन, जो आपका कैंसर क्रिएटिंग एस्ट्रोजन है, जो आपका वेट है, जो एजिंग क्रिएट करता है, कोलेजन डिप्लीशन, वो जो होता है बैड एस्ट्रोजन होता है. तो उसको हम कैसे बैलेंस आउट करते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट में? So सबसे important चीज I will say in estrogen dominance, which also can come from, by the way, plastic use, receipts, हाथ में मलना,
गंदा खाना खाना, अल्कोहल पीना, मतलब बैड स्लीप एंड ऑल दैट बैड लाइफस्टाइल बेसिकली, तो वो एस्ट्रोजन डोमिनेंस को इंक्रीज करता है. सो हाउ यू कैन एक्चुअली टेक केयर ऑफ इट, कि आप क्या कर सकते हो कि आप पहले तो अपना एस्ट्रोजन डोमिनेंस के लिए जो फूड्स होते हैं ना, जो डिटॉक्सिंग फूड्स होते हैं, लाइक ब्रोकली, लाइक ग्रीन्स, स्पिरुलिना, मतलब ये डिटॉक्सिंग होते हैं. सो दे एनगल्फ द बैड एस्ट्रोजन एंड एक्चुअली देन आपका अच्छा एस्ट्रोजन जो आपको एंटी एजिंग रखता है, बोन्स को हेल्दी रखता है, स्किन को टाइट रखता है, वो एस्ट्रोजन फिर इट कैन प्रेजेंट इट सेल्फ फर्दर. नहीं तो बैड एस्ट्रोजन तो आपको सारा खींच के ले जाता है ना नीचे. तो राइट. उसमें क्या होता है कि आपको नेसेसरीली एस्ट्रोजन क्रीम नहीं लगाने की जरूरत या गोली खाने की जरूरत नहीं होती है. मोस्ट ऑफ द टाइम इट कैन बी हैंडल्ड बाय अ गुड लाइफस्टाइल. बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट होती है ग्रीन वेजिटेबल्स, सबसे इंपॉर्टेंट होती है ब्रासिका फैमिली, लाइक ब्रोकली एंड केल एंड ऑल दैट. सो Brussels. दोज, हाँ, तो ब्रसेल्स स्प्राउट्स, those are the ones that you want to have and you want to engulf the bad estrogen. So this is a story of bad estrogen and I'm telling you estrogen dominance में ना लोग मोटे हो जाते हैं, ऊपर वाला पार्ट मोटा हो जाता है, बूब्स मोटे हो जाते हैं, हाथ मोटे होते हैं, तो ऐसी बॉडी हो जाती है. यू अंडरस्टैंड? विद Yeah. एस्ट्रोजन डोमिनेंस बॉडी बिकम्स लाइक दिस, whereas when you're not estrogen dominant you're like this, like you're apple shape. In estrogen dominant you become what should I call that? I don't know. I mean, Inverted pyramid. opposite in inverted pair. I would have called it inverted pair. So where this and this all becomes very heavy, and you become like basically थोड़े आप मोटे दिखने लग जाते हो on the upper body and the lower body actually shrinks. So it becomes opposite, क्योंकि आप जब young होते हो तो आपकी thighs बड़ी होती है, you're nice and curvaceous, but the curves go away and फिर आप यहाँ से ऐसे मोटे हो जाते हो. तो ये एस्ट्रोजन डोमिनेंस का बहुत बड़ा फीचर है. अब ऑब्वियसली फाइब्रॉइड्स भी होते हैं, पीसीओडी भी है, एस्ट्रोजन डोमिनेंस के और भी बड़े सारे इफेक्ट्स होते हैं. Okay. ना वेट लॉस नहीं होता आसानी से. Weight loss भी नहीं होता because since the estrogen is lying in your, like, in the, what do you call you could see sorry, you could see my brother crawling there. 9 बजे रात को और क्या होगा? बच्चे, ब्रदर, फैमिली मेंबर्स. So I was trying to hide himself. Anyway, so what happens is estrogen dominance for the weight, ना weight के साथ जो relation है ना इसका, एस्ट्रोजन डोमिनेंस से वेट लॉस बिल्कुल नहीं होता, और जो होता है ना वो बड़ा स्टबर्न वेट हो जाता है, बिकॉज सी एडिपोज टिश्यू होता है ना जो आपका ये फैट, इसके अंदर एस्ट्रोजन है, राइट. और वो बैड एस्ट्रोजन इसके अंदर फंसा हुआ है, और आप अपना वेट लूज, डाइट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर ये आपका नहीं जाता. यू अंडरस्टैंड? सो हो क्या रहा है, वो बैड एस्ट्रोजन इज स्टक टू योर एडिपोज टिश्यू. इट्स लाइक they're friends. So you have to take it out by detox mechanisms, like I told you, doing all the food changes, lifestyle changes and all. Okay. So हार्मोन्स इम्बैलेंस है ना, जो औरतें चिड़ी हुई रहती हैं, एंड इट्स रिलेटेड टू एवरीथिंग. बिकॉज डॉक्टर अंजलि, मैंने अपनी आंखों के सामने एक बहुत ही हंसती हुई लेडी को मेनोपॉज के बाद चिड़चिड़ी नेगेटिव लेडी देखा हुआ है, एंड इट वाज ऑल बिकॉज दीज हार्मोन्स ऊपर नीचे, देन क्रैंकीनेस. मतलब मैंने उनको कभी देखा नहीं था रोते हुए. एंड देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, लाइक फ्रेंड्स मॉम्स, एंड अब वो छोटी छोटी बात पे रोने लग जाती हैं. सो दिस इज क्लियरली साइंस ऑफ हार्मोन्स इम्बैलेंस, राइट? तो इसके लिए नेचुरल रेमेडीज क्या है? मतलब कहाँ, अगर एक औरत है, लेट्स से उसको छोटी बात ओवर थिंकिंग करना, नेगेटिविटी, छोटी बात पे गुस्सा आता है, बालों की क्वालिटी खराब हो गई है, एंड ऑल जो हार्मोन्स इम्बैलेंस के सिम्टम्स होते हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो गए हैं, एंड अर्ली मेनोपॉज हो रहा है, मुंह पे बाल आ रहे हैं, तो शुरुआत डाइट में या लाइफस्टाइल में शुरुआत कहाँ डाइट से से है. सिर्फ देखो, आपको ना सबसे पहले देखना पड़ेगा आप कितने कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो, कितनी शुगर खाते हो, क्योंकि वो दोनों इन्फ्लेमेशन करते हैं, राइट? राइट. तो अगर आपका कार्बोहाइड्रेट सिंपल मैदा है तो बहुत इन्फ्लेमेशन होगा. इफ योर कार्बोहाइड्रेट इज अ नाइस होल व्हीट और होल ग्रेन थिंग, so it'll cause less of these problems. लेकिन lot of people they eat more carbs, प्रोटीन पे ध्यान नहीं होता. वेरी कॉमन. प्रोटीन पे कोई औरत ध्यान नहीं देती, लिटरली. कोलेजन पे, प्रोटीन पे नोबडी रियली पेड अटेंशन. एंड कहने की बात अच्छी होती है कि ओ या व्हाट, प्रोटीन होना चाहिए बॉडी में, कार्ब कम खाना चाहिए, पर करता कोई नहीं है. इवेंचुअली हम वेजिटेरियन, लाइक इंडिया में तो सब वेजिटेरियन होते हैं ना मोस्टली. सो वेजिटेरियनिज्म में क्या होता है, हम रोटी, चावल, ब्रेड,
ऐसी चीजें ज्यादा खा लेते हैं। एक्चुअली हम प्रोटीन पे ध्यान नहीं देते हैं, अंडे तो हम खाते ही नहीं। और प्रोटीन शेक किसी को बता दो तो दे गेट टेंस्ड कि ओ माय गॉड, मैं प्रोटीन शेक पीना पड़ेगा किडनीज मुझे, लाइक खराब हो जाएंगी, किडनीज किडनीज खराब। खराब हो जाए। Exactly. So you see, you have to understand कि whey protein is not bad. It just has to be done in a certain way. You know, एक डोज होती है उसकी। अब जैसे लोग क्रोसिन भी तो खाते हैं बुखार के लिए, मतलब पैरासिटामोल खाते ही है ना, राइट? तो वो आपको, अब पैरासिटामोल के आप साइड इफेक्ट्स पढ़ोगे तो आप पैरासिटामोल लोगे ही नहीं कभी। So you have to understand that if you're taking some kind of protein in your diet, it's actually not bad. It's actually good because it's good for your bones. आपकी हड्डियां मजबूत रहती हैं, आपकी मसल स्ट्रांग रहती है। यू सी देयर इज अ मसल दैट, एज मेरे को बड़ा दिखता है कि एज आई सी women aging, the muscle is gone. बिल्कुल ऐसे थुल थुल स्किन हो जाती है, बिल्कुल मसल नहीं होती, ना पेट पे, ना एस पे, ना हाथों पे। तो वाई, Did मतलब you आप did you प्रोटीन just खाओ say ना। ass? I thought it was glutes. Welcome. So I'm like a Dr. listen. I'm a very Anjali, frank. I I'm I very am frank doctor. please, मैं वही बोलूंगी जो है, spade is a spade. Instagram थोड़ा कम करो। Okay. चलो हंसे तो सही, कोई तो हंसा। Anyway, so I'm just saying कि glutes, you know. Anyway, so what happens is कि you know, you have to build muscle, और उसके जो भी आपके ये symptoms होते हैं, चिड़चिड़ापन, ये सारे चले जाते हैं अगर आप आपका लाइफस्टाइल ठीक कर लोगे। बेसिक चीज है, कोई हार्मोन रिप्लेसमेंट के लिए नहीं आता ना मेरे पास, मैं पहली चीज कहती हूँ फूड फर्स्ट, फूड फर्स्ट, फूड फर्स्ट, लाइफस्टाइल फर्स्ट, लाइफस्टाइल फर्स्ट। क्योंकि पहले यही ठीक करना होता है। यही ठीक नहीं है तो आप कितने ही हार्मोन ले लो, कितने ही कोलेजन सप्लीमेंट ले लो, कितने प्रोटीन सप्लीमेंट ले लो, कुछ नहीं होने वाला। बेसिक ठीक करना पड़ेगा। शुगर कंजम्पशन बिल्कुल कम करनी पड़ेगी, अल्कोहल बहुत कम करनी पड़ेगी। मतलब इट इज अ गिवन, मतलब आपको करना ही पड़ेगा ये, यू नो। Okay. तो कार्ब्स कम, फैट ज्यादा। वेजिटेरियन लोग प्रोटीन कहाँ से ले? सीड्स, तो नट्स। वेजिटेरियन लोग बहुत प्रोटीन होता है, देखो ग्रीन वेजिटेबल्स में प्रोटीन होता है, काफी होता है, डिसेंट होता है, पर हम इतनी सब्जियां खाते ही नहीं, बाय द वे। सब्जी इतनी सी होती है, रोटियां इतनी सारी होती है, यू अंडरस्टैंड? सब्जी इज ईटन लाइक अचार लिटरली, whereas सब्जी should be this much and roti should be this much, you know, it should be like a different, मतलब ऑपोजिट होना चाहिए। बट क्यूकम्बर सैलेड्स, अगर आपको पत्ते नहीं मिलते तो आप क्यूकम्बर, खीरा तो हर जगह मिलता है ना, खीरा तो यू कैन ईट, राइट? खीरा खा सकते हो। ब्रोकली नहीं मिलती, ब्रोकली चलो वी फाइंड इट लाइक अ फॉरेन वेजिटेबल, नहीं मिलती तो आप पत्ता गोभी खा लो भाई। पत्ता गोभी से डरते हैं लोग, पत्ता को कीड़ा हो जाएगा दिमाग में, यू नो। आई हैव दीज पीपल कमिंग टू मी, वो पत्ता गोभी खाने से, अरे कुछ नहीं होता है यार, यू बॉयल इट, कुक इट, कुछ नहीं होता है पत्ता गोभी। इट्स अ गुड वेजिटेबल एंड इट्स अ लो कैलोरी वेजिटेबल। पूरी पत्ता गोभी में इतनी कैलोरी इतनी दो ओरियो बिस्किट में होती, यू सी। तो वो तो हम खाते नहीं, हम सोचते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा बहुत ज्यादा। प्लांट्स में अच्छा प्रोटीन होता है, नट्स है, वेजिटेरियन लोगों के लिए पनीर है, टोफू है, टेम्पे है, हेम्प है, और वे पाउडर तो है ही, यू नो। एंड आई थिंक अ वेजिटेरियन शुड नेवर हैव एन एक्सक्यूज कि मेरी लाइफ, मेरे डाइट में इतना प्रोटीन नहीं है। आई डोंट एग्री विद दैट। ओके, ग्रेट। सो हार्मोन्स बैलेंस करने की शुरुआत डाइट से, प्रोटीन्स एडिक्वेट लो, अपना लाइफस्टाइल, और लाइफस्टाइल में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। Very important. Very, very important. I think I would place the first importance on strength training. I don't think लोग करते हैं। वो सोचते हैं डंबल उठाने से हम लोग ना बड़े हो जाएंगे। अरे हम बड़े हो ही नहीं सकते, हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन ही नहीं है। हम राइट। कैसे मैं कह रही हूँ, लोग टेस्टोस्टेरोन लेके इतनी मसल नहीं बना पाते, तो हम 2 kg के डंबल से कितनी मसल बना लें? एटलीस्ट इतनी तो हो जितनी आपके लिए एक मेटाबॉलिक मेमोरी बन जाए, यू नो। इतनी तो मसल होनी चाहिए ना, तो वो Oh, लोग wait, डरते let हैं। me, doctor, my ass. I had to show you. मुझे, मैंने बहुत बहुत मेहनत करी है, और मैंने गुड। फैमिली बबल, मेहनत का ओके, मेहनत का फल मीठा होता है वैसे। बबल बोटी बना ली है मैंने। वेरी गुड। कितना टाइम लगा? 4 years. Yeah, it takes long. I mean, you have to really eat a lot for making good glutes to be, you know, like to be politically correct. So if you want to make good glutes, you need to eat.
and खाना खाना पड़ता है और there's some time of exercises you do, and of course you can try hormones also. ऐसा नहीं है, testosterone can help build the booty up, but we're not Do going you into that. recommend testosterone externally? I do, yeah, Yeah. I do. आप Yeah, देते हो क्या? क्रीम देते हो आप? cream is what we use, but in the US we use pellets Okay. and patches and shots. But Shots. इंडिया में हमारे को सहूलियत नहीं है इसकी, तो क्रीम इज द सेफेस्ट आई फील, बिकॉज Okay. बायोडेंटिकल फॉर्म की क्रीम आती है. Okay. In otherwise, I mean, people do take testosterone. ऐसा नहीं है, they take shots, but those are allopathic. They're not bioidentical actually. फर्क है दोनों में. Okay. Okay. Hmm. So, have you taken ever testosterone? I have last year. I had a lot of muscle loss. I had a surgery, unfortunately, and I had a lot of muscle loss. So I had to take it for 3 to 4 months Okay. in combination with estrogen and testosterone and progesterone and Yeah. pregnenolone. So I took four. Took it for 3 to 4 months, and it really helped me because it built my muscle back from all that. 3 months I couldn't exercise. 3 months I was almost like kind of in bed. So yeah, that really helped me. I mean, helps everybody actually if you try. Yes. Yeah. Yeah. Women after menopause, do you recommend them external estrogen? It really depends. I don't recommend to everybody. One of my main concerns with women is if two main concerns will be if they've had a family history of heart disease, they can have after estrogen depletion, मतलब estrogen खत्म होने के बाद heart disease plus I would say osteoporosis, weakening of bones. तो आपके जो bones है वो जाली वाले हो जाते हैं. So estrogen की कमी से, और ज्यादा लोग ना जो पतले होते हैं ना उनको ज्यादा होता है ये जो skinny लोग. Okay. So if you're skinny and you have you did a DEXA scan at 50 years old, DEXA scan जो bone scan, उसमें आपका osteopenia आता है, तो I think that person could do wonderful with estrogen replacement, and very few times we'll use it for face and everything, like Okay. yeah, I don't do that. I do more therapeutic. Okay. Okay. Mm. So somebody wrote in the comment section, how to kill my cravings for sweets. That is very good. So I think the sweet craving comes from a bad gut. Okay. कि अगर आपका intestinal health healthy नहीं है और you have a lot of bacteria growing in your intestine, you ज़्यादा health वो sugar craving होती है ज़्यादा. So in this case, what I suggest is कि maybe you should try cleaning up your gut. Maybe go on some grain-free diet for maybe 2 to 3 days, taking probiotics, and it's the shortest way to reset the gut. Like, Mm-hmm. 3 days of no grains, 3 days of doing very clean vegetables and maybe proteins, fats, and then just do like a week, 10 days of probiotics. That really helps. Okay. So Yeah. I used to tell people take more fat, coconut fat, especially that. I mean, Yeah. for me, it helps So a lot. yeah. Yeah, so what happens with coconut fat is like you will find your fellow doctors telling the patients, "Oh my God, you're taking saturated fat." So then we have a problem because you're giving your patient the right amount of fat, and then we have somebody who says, "Oh my God, you're giving patient a saturated fat," and then there becomes patient doesn't know who to trust because there is इतना science नहीं है, इतना फैट के बारे में बोला नहीं जाता. फैट को हमेशा बुरा ही माना जाता है. सो साइंस जो हमारी चली आ रही है ना उसमें बड़े हम फंस जाते हैं. तो फैट खाना चाहिए, बहुत जरूरी है. इनफैक्ट आई वुड से 10 चम्मच घी के दिन में खाने चाहिए एक्चुअली, बट यू कांट डू मैं दैट. खाती हूँ हाँ literally हाँ. because yeah, I'm 90%, या like mine's is 60-40 like and 10. ओके, गुड, 60 ग्रेट. आई 30 or मीन 10. इफ यू कैन डू Yeah. दैट बिकॉज लोग फैट खाते ही नहीं है. आई थिंक जो लोग घी नहीं खा पाते उनको मैं बोलती हूँ आमंड बटर या कोई भी नट बटर खा. Okay. That is also good because it acts exactly in the same way. So if you can't eat coconut, some people find it smelly. You can't eat coconut, then eat nut butter. Usually almond butters are my favorite in terms of everything, like inflammation wise or
Almond butter is very good. But ghee, coconut oil, nuts, seeds, they're all flax oil. They're all great sources of good fats. ओके किसी ने पूछा अभी कमेंट्स में कि पिगमेंटेशन इज रिलेटेड टू हार्मोन्स इम्बैलेंस. Um, Sometimes yes. If you have, I don't know what pigmentation, I'd probably, they could be talking about face. Some people have pigmentation. And then they could be talking about pigmentation behind your neck, like here, yeah, and underarms. And those are actually all signs of insulin resistance. मतलब Yeah. आपका insulin बढ़ा हुआ है. So usually it's insulin is the hormone, not the female reproductive hormone that causes pigmentation. So it's like high insulin levels, insulin resistance. So that kind of thing. Yeah, I've seen a lot. You'll see, if you look at a person with a lot of dark cheeks, you please ask them how their sugars are, and you'll 90% find their sugars are not in control. So yeah, that's I very have common. here this right now. You cannot see, or maybe see. Hmm. I have here that chip, continuous glucose monitor. Oh, the CGM. Yes, the CGM. Hmm. And what I found out that strength training, maybe my muscles are broken down and the glycogens has been stored, like released. तो जैसे ही मैं strength training करती हूँ, मेरा It'll blood go sugar up. Yeah, हाँ it'll go high up. हो जाता Yeah, है, it's normal. and walking से वो फिर भी वापस low हो जाता है. See, when you do muscle building, na, so that's exactly what you said. There's a glycogen theory behind it. और उसमें क्या होता है कि आपका sugar high होता है, but you don't have to worry because it'll actually go down, you know. Yeah. It is only a transient rise. हाँ, वो वापस चले जाता है. But it's a Okay. good it's a good rise, you know. होना भी चाहिए ना, पता लग रहा है ना कि stored energy निकल रही है. Okay. Yes. Yeah. Yes. एक ना मेरा supplement है. It's called estrogen balance with the DIM. आपके Yeah. हिसाब से वो किसको लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए? Estrogen dominance, bad estrogen circulating, estrogen dominance, women with fibroid, acne, weight gain, they all benefit from DIM because DIM takes away your bad estrogen and lets your good estrogen be there क्योंकि वो हमें चाहिए वो तो और जो गंदा वाला estrogen है वो clear कर देता है DIM और थोड़ा सा उसको careful रहना चाहिए for men. I don't give DIM a lot to men because sometimes it can backfire with men. Um, they just have to be like told about this that we are giving you the DIM, and a lot of men do muscle building, and a lot of men also have boobs, male boobs. If you see male boobs, those are all bad estrogen. So those people, it works beautifully. Beautifully. It almost works like an anti-estrogen. But other guys, you have to be careful because guys actually don't have enough estrogen anyway. So, if you give them, वो भी चला जाता है. So, yeah, just have to be a little careful about men. Otherwise, I think for women, I think invariably all women should have them. सबको ही खाना चाहिए. सबके अंदर है bad estrogen. Right. Hmm. One question is एक किसी ने पूछा YouTube से कि उनका AMH is 6.29. Okay. That sounds like a PCOD issue. PCOD. Mm-hmm. Okay. Higher AMH goes up in PCOD. Lower MH is bad for fertility. But if Okay. you're around 3, you're good. Okay. So, Yeah. guys, PCOD could be one issue. So, what is the reason for early menopause? By the way, I doctor, here in Germany, you must be knowing, must be happening in America too. So here, women wants to bleed till 70. So after Yeah, 50, that's good. yeah, after 50, they are taking all these bioidentical hormones. And I know here some of my lawyers, they are female lawyers, Uh, and she's uh, 68 and she's still hmm. bleeding. Which makes them feel youthful, right? Youthful. Okay. So Yeah. my question is, what is the reason for early menopause? See, early menopause can happen one genetically, that your mother had it, you will have it. Okay, no one can help in that. Of course, bioidenticals always help, but that is something. Then early menopause can happen due to early ovarian failure, and that also happens due to a lot of stress and lifestyle diseases. Mm-hmm. So if you have early menopause, you want to look at your lifestyle, Mm-hmm. because early menopause also means early shutdown of your reproductive system and your Yes. youth, Yeah. you know. Yeah, you want to be young for longer, no?
Mm-hmm. So yeah, so early menopause, definitely look at your lifestyle, definitely look at stress levels. You have to meditate, guys, like really. You have to bring down the stress levels at any cost. I mean, no supplement will help. आप क्या करते हो Yeah. स्ट्रेस लेवल को डाउन करने के लिए? I meditate, yeah. I meditate. I listen to high frequency vibrational music and listen रात को to लगा के सोते हो आप? नहीं लगा के तो मैं नहीं सोती हूँ but I listen to a lot of like online lectures and that white noise that पंखा चला के मैं भी yeah सुना, आई डू दैट टू, uh, राइट I राइट. do the white noise more. Yeah, but taking a 20-minute, maybe a chakra balancing session on YouTube or actually with someone else, like who someone knows how to heal you, taking a session or doing some kind of meditative work where your mind is trying to shut, like a Reiki or some, कुछ तो करना चाहिए because mental health is as actually more important. I feel now with time, I just turned 49 yesterday, and I think with mental health not being given as much importance, देना चाहिए mental health को बहुत importance देना चाहिए. It's मैंने actually ना YouTube more. के ऊपर, पता है क्या हुआ डॉक्टर, मैंने ना YouTube के ऊपर एक वीडियो बनाया सैगी ब्रेस्ट का. रोज के आज तक 5,000 व्यूज हैं, ठीक है. मैंने ना I उसके will बाद watch. हाँ हाँ, मैंने ना स्पिरिचुअल हेल्थ के ऊपर बनाया, वो वीडियो ही फेल हो जाता है. पता है लोगों को ना क्या है ना कि स्पिरिचुअल हेल्थ इज एक्चुअली आपको काम करना पड़ता है, राइट? आपके माइंड को काम करना है उसमें. आप अपने माइंड को गलत चीज में लगा लो या अच्छी चीज में लगा लो, लेकिन आदमी का दिमाग ना गलत चीज में जाता है, नेगेटिव थिंकिंग में जाता है, ये नहीं होगा वो नहीं होगा. एक्चुअली अगर हम थोड़ा सा भी पॉजिटिव थिंकिंग रख लें, बाय गॉड आई एम टेलिंग यू इट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस. लेकिन वो पॉजिटिव थिंकिंग आए कहाँ से? हमें तो लगता है कि हाय हम सोचेंगे तो गलत होएगा, सो वो बड़ी जरूरी है यार, वो बड़ी जरूरी है. दैट इज लाइक वन इम्पोर्टेंट Right. We will take two more questions, and the second थिंग. last question is, what is the reasons of kids' early puberty? A lot of processed food. I think girls are eating too much processed foods. It's too much Zomato happening, I think. Too much of, breads and instant noodles and milk and dairy. That's a very big reason for. And actually, लड़कियों को ही होती है early puberty, if you see. Guys don't generally get it. Precocious puberty is more common in girls. Mhm. And this is one of the reasons. Dairy is, I think, one of the worst things. वो Yeah. कोल्ड कॉफी का जो एक इंडिया में होता है ना, कोल्ड कॉफी पियेंगे. Or even in other countries, frappuccino and like that kind of thing. I mean, dairy is bad, yeah. Dairy is not good. Simple. Yeah. Right. Okay. Somebody says, Dr. Anjali, you're looking so pretty. Okay. So hormones and hair. Hair. हाँ, बाल बुल ठीक है अभी मेरे वैसे. हाँ, हार्मोन एंड हेयर के बारे में बात करते हैं क्योंकि hair loss is very common in hormonal perimenopausal women and menopausal women. And it's an important thing and it's related to estrogen. And अगर आपका एस्ट्रोजन बैड एस्ट्रोजन ज्यादा है और अच्छा एस्ट्रोजन कम है, या आपका एस्ट्रोजन डिप्लीशन, सो बैड एस्ट्रोजन का डिप्लीशन भी बड़ी मुश्किल से होता है, यू सी. तो अच्छा एस्ट्रोजन जो होता है ना वो सर्कुलेशन से चला जाता है, and bad estrogen circulating and it takes away hair follicle. So basically you also secrete a lot of testosterone. Some women have PCOD, they will have more testosterone secretion. तो वो hair follicle जो है ना testosterone से friendly नहीं होता है, वो निकल जाता है, right? तो Then male type हाँ, baldness. मेल हाँ मेल पैटर्न बॉल्डनेस है ना. सो या यू हैव टू मेक श्योर दैट वो चीज ना हो आपके अंदर कि आप हेयर लॉस हो रहा है तो प्लीज फाइंड आउट. वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ हेयर लॉस इज आल्सो आयरन डेफिशिएंसी, व्हिच आई ऑलवेज टेल पीपल कि देख लो यार, आयरन लेवल्स देख लो, थायराइड लेवल्स देख लो, टेस्टोस्टेरोन देख लो, पीसीओडी तो नहीं है. दोस काइंड ऑफ hormonal checks are very important. And I think if you get it checked and go to a decent doctor तो treat हो ही जाता है. Hair loss is not that difficult. जल्दी catch करना पड़ता है उसको थोड़ा. ओके, सो अगर लेट्स से किसी का मेनोपॉज हो गया है और उसके बाद उनको एस्ट्रोजन, गुड एस्ट्रोजन चाहिए, सो डू यू रिकमेंड फाइटो एस्ट्रोजेनिक फूड्स? I mean, food is mainstay. Definitely, food क्या is a रिकमेंड mainstay करते of. हो, कौन से फूड एस्ट्रोजन के I लिए? like to give them soy. Soy is a very, very good source of phytoestrogens. I think it's a main source. I mean,
एंड लोग सोया से डरते हैं, लेकिन हमें क्या डरना है ना, हमें सोया चाप से डरना है, सोया से नहीं डरना। आई गेट so many people हमने सोया चाप खाया, वेरी प्रोटीन खाया, लेकिन एक्चुअली it's actually full of मैदा, by the way, you know. नहीं, So वो जीएमओ से उसमें डरते हैं, क्योंकि बीच में ये है ना, हाँ, क्योंकि आर्टिकल सारे फॉरेन के होते हैं, तो मे बी इंडिया का इंडिया में तो सोया। देखो जीएमओ का कोई देखो, अब मैं बताती हूँ कि सोया चाप आपकी लोकल बेकरी में बन रहा होता है, ठीक है। वो मेरा एक दिन ना चांस बना था, आई वेंट टू अ बेकरी इन वन ऑफ स्मॉल टाउन्स बाय चांस। अरे वो सोया चाप मैदा है, उसमें इतना सा सोया होता है। इट्स लाइक द स्टोरी ऑफ ओट्स बिस्किट दैट यू बाय इन द मार्केट, लाइक इतने से ओट्स होंगे, बाकी सारा मैदा, राइट। सो इट्स लाइक दैट स्टोरी। सो ये प्लीज डोंट फॉल, उसके लिए मत गिरो ना, उन चीजों पे मत गिरो। फाइटो एस्ट्रोजेंस खाने हैं, एडमामे खाओ, सोया की फली खाओ, सोया का आटा खाओ, सोया के नगेट्स खाओ, वो मत खाओ ना, सोया चाप मत खाओ। और सोयाबीन, हमारा जो सोयाबीन होता है ना, सोयाबीन इज अ गुड दाल। People don't eat soybean as much, you know, they eat more rajma and tastier बट stuff. डज सोया आपके थायराइड को स्लो डाउन कर सकता है? See, not always, you know, it's not always a story. Sometimes, if the soya is obviously very processed, it can, but it's not anti-thyrogenic. But of course, if you are combining it with, you know, raw cruciferous vegetables, then it's a bad problem. Otherwise, soya doesn't really slow down. So if I have a person I have to give a diet plan to, so I will make sure that I don't put a lot of soya in, but I want to balance out, you know, कि हफ्ते में 2-3 बार ले लिया। अब रोज एक ही चीज करते रहोगे तो वो तो प्रॉब्लम तो, रोज आप गोभी yeah. फैमिली भी खाओगे तो इट्स हाँ, गोइट्रोजन, it's तो goitrogenic, right? So yeah, या exactly. आई So that is a अंडरस्टैंड. story about soya. It's not really bad. It's just got a bad reputation sometimes. Okay, so one person is asking, I will now start taking Palak's estrogen balance. तो मैं कितने दिन का कोर्स करूं, या कितने महीने का कोर्स करूं, या साल में हर साल 3 महीने का कोर्स करूं, कैसे करना है हाँ, ये? आई थिंक वो ठीक है, 3 महीने का ठीक है, तीन 3 महीने महीने का का। साल में एक बार, ठीक है. या Okay, या thank you so much, Dr. Anjali, for taking time out. And थैंक बहुत यू। सारे questions, मेरे भी बहुत सारे doubts clear हुए हैं. I really loved connecting to you. And लाइकवाइज, thank you लाइकवाइज। so much. And you are already relaxed. Your breathing says, मुझे ना इंसान की breathing एक बात और दूसरी बात के बीच का जो breath होता है ना, उससे समझ आता है कि इस इंसान के हार्मोन्स कितने balanced हैं. थैंक यू। Really, you are so, थैंक यू। matlab, you are on a show and then you answered, your brain is totally awake, but then you are already slowing down. You've dimmed your lights already and relaxed. So, Melatonin has to start working on its own, you know. yes. So, yeah, Yeah. amazing, amazing. Thank you so much. Have a great evening. Thank you, Have a great week. everybody. Thank you, Palak, for getting me on this session. It was amazing, and I hope you guys learned something. And Sure. भूल चूक माफ करना, please. कई गलत शब्द निकल आए आज। No, it's okay. I am exactly like this. So they know me. So it's okay. Okay, आज cool. इंस्टा का जमाना है, ऐसे ही काम चलता है. चलो ठीक है। I'm glad people liked it. Yeah. Take care, Dr. Anjali. Bye bye. Bye bye. Good night, wherever Bye. you are, guys. Bye. Right. So, guys, I hope you liked the show. जैसे कि डॉक्टर अंजलि ने बोला, you can take now and then soya if it's non-GMO, and look for a good source of soya, but don't take processed soya. Soya का आटा ले लो, which is estrogenic and bad estrogen के लिए. You can, मैं सिर्फ शो को sum up कर रही हूँ. And that's what I learned, that soya is important. Then she told about the fat, important of fat, and she said strength training with the weights is very important. So जो लोग हमारे साथ नहीं करते हैं वर्कआउट, मैं उन लोगों को यही कहूंगी कि हमारे साथ हम लोग सिर्फ हफ्ते में 2 से 3 बार करते हैं, वो करना शुरू करो. एंड यस गाइज, हमारे वीडियो को जरूर शेयर करना. जो लास्ट हम लोग क्या करते हैं, आप लोग अपना शेयरर बैच, जब आप बार बार वीडियो शेयर करते हो, मेरे ख्याल से 4 या 5 बार, तो आपको एक शेयरर बैच मिलता है. वो शेयरर बैच अगर मेरे को आप उसका स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, पलक नोट्स की आईडी
पे कहीं पर भी शेयर कर दोगे तो हम लोग उसमें से एक लकी विनर को उठा के वी गिव 15% डिस्काउंट ऑन ऑल सप्लीमेंट्स। जो इस हफ्ते की विनर है वी विल अनाउंस इन अ पोस्ट, हम एक पोस्ट में दिखा देंगे। सो उनको 15% डिस्काउंट मिलेगा। आपको शेयर करना है वीडियो, अपना शेयरर बैच हमें भेजना है एंड यू विल गेट 15% डिस्काउंट, वन लकी विनर। Okay, have a great evening, guys. I hope you like the show. Do not forget to share. We have to make this show successful. Bye bye. Take care. Bye, Pooja. Bye, Yabita. Bye, Bhavna. Neeru, thank you. Bye bye.